Good morning, Gopal. Good morning, Adesh. Okay. So moving to today's current affair. So 27 lakh Manrega workers deleted between October 10 and November 14th. So before understanding this news, let's understand the basic concepts. So what is Manrega? What is it? Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. So what it promises? It promises 100 days of employment to us. Imagine that you are living in a village, right? And your income is not stable, right? So season workers भी होते हैं, right? So what it does, it gives you employment for 100 days. ठीक है? अब इसमें issue क्या आया है? Any idea? Okay, why it was created? To solve two big problems. Like पहला income generation का, okay. What else? What else? Poverty and migration. So as it was seen, कि like a large number of people were like moving from rural to urban, right? So to stop that, this Manrega Act was issued. ठीक है? So this creates what? First, it creates employment security. What it creates? Employment security. ठीक है? So if a person has like no other jobs, that he can earn something from this, right? Then second, stable income for poor families. ठीक है? अगर किसी के पास पैसे नहीं है, ठीक है, एंड दे कैन नॉट इवन बोरो, ठीक है, ड्यूरिंग योर टफ टाइम, ठीक है, तो ऐसी ऐसी अगर कंडीशंस है तुम्हारी लाइफ में, तो दिस एक्ट कैन हेल्प यू. ठीक है. नेक्स्ट, विलेज डेवलपमेंट में हेल्प करता है. जो माइग्रेशन हो रही है एट सच लार्ज नंबर, इट कैन स्टॉप दैट, राइट? पीपल कैन स्टे नियर बाय एंड वर्क नियर देयर विलेजेस. ठीक है. नेक्स्ट, वुमेन एम्पावरमेंट. 50% ऑफ मनरेगा वर्कर्स आर वुमेन. ठीक है. देन सोशल जस्टिस. हाउ इट इज प्रमोटिंग सोशल जस्टिस? How it is promoting social justice? Okay, Ashutosh, got it. SC और ST ग्रुप्स में बेसिकली जो लैंडलेस फैमिलीज है और मार्जिनल फार्मर्स है, राइट, इट हेल्प्स टू दोज पीपल आल्सो. ठीक है. अब रिसेंटली न्यूज क्या आई है? सो 15 अक्टूबर एंड 10 नवंबर, 15 अक्टूबर 10 and 3 November, what happened? So 27 lakh workers, right, they registered under Manrega were deleted from the database. ठीक है. So in the same period, only about 10.5 new registration happened. So the difference is 27 lakhs delete हुए हैं और 10 lakh क्या हुआ है? New registration happened. Is it a good thing or bad thing? We are reading about Manrega and the news came that the registration, this is a news between 10 to 14 November. तो क्या हुआ है कि 27 लाख वर्कर्स, राइट, वो इस एक्ट के अंदर डिलीट हो गए, राइट, उनका डेटा डिलीट हो चुका है. ठीक है. एंड 10 lakhs न्यू रजिस्ट्रेशन हुई है. ठीक है. सो इज दिस अ गुड थिंग और बैड थिंग? Loud. Yes. Maybe they got a permanent job. They got a permanent job. Acha, okay. So you are saying that they got a permanent job. ठीक है. Yes. Next. The same period, maybe unemployment is reducing due to their getting jobs. Okay, unemployment is reducing. Okay. Maybe if the registration is less. Okay. So people are तुम getting कह रही हो तो. permanent jobs, that's why they are not registering here. ठीक है. What else? What else?
So from this we understood कि deletions is like much larger than the new registration. So it is not a good thing first of all. ठीक है. तो मनरेगा वर्कर्स ओनली फॉर पीपल हुज नेम्स आर इन द गवर्नमेंट डाटाबेस. ठीक है. अब सिर्फ उन्हें बेनिफिट मिलेगा जिनका नाम है उस डाटाबेस में. अब जिनका डिलीट हो चुका है दे वोंट बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एक्ट, राइट. तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? या तो उनका जॉब कार्ड है जो है वो इनवैलिड है, राइट. दिस कुड बी द फर्स्ट रीजन. देन अनदर रीजन कुड बी दैट दे कैन नॉट डिमांड वर्क, है ना, एंड दे कैन नॉट गेट वेजेस. और फिर उसके बाद दे आर बेसिकली रिमूव्ड फ्रॉम द स्कीम. जो भी बेनिफिट्स इस एक्ट में मिल रहे थे दे विल नॉट गेट दैट. तो अब ये क्यों हुआ होगा? There are two main reasons for this. First of all, eKYC drive. eKYC. What is eKYC? Electronic know your customer, Aadhaar based verification, right? So government said that you have to verify yourself, right? क्यों verify कराते हैं? So if you have to like stay in the system, you have to verify yourself. Why? To stop fraud, ठीक है, and to make sure that each worker has a unique identity, है ना. इस रीजन से हम लोग वेरिफिकेशन कराते हैं. To ensure that whatever the wages are coming, right, they are going to the right person, इसलिए हम लोग कराते हैं. And to prevent duplicate job cards, है ना. इसका मतलब है कि the system checks that if your Aadhaar card is, you know, and your bank account, right, they are matching your like real identity or not, right. तुम्हारी job identity से match हो रही है या नहीं हो रही है, right. So this person might get, you know, temporarily block or deleted अगर वो चीज verify नहीं होती है इसके अंदर eKYC के अंदर, right. So this is the first reason. Then another reason is cleanup. What is cleanup? Its word itself says. Yes. Double registered or fake registered. एग्जैक्टली exactly. जितने भी फेक जॉब कार्ड्स हैं, राइट, डुप्लीकेट वर्कर्स है कि सेम पर्सन के दो दो जॉब आइडेंटिटी कार्ड्स बने हुए हैं, राइट, वो. और फिर उसके बाद पीपल हु मूव्ड अवे परमानेंटली, जैसे कि तुमने बताया योर फर्स्ट सेकंड पॉइंटर वाज दिस कि वो परमानेंटली वहां से मूव कर चुके हैं. अच्छा, ये तो गेव अनएम्प्लॉयमेंट एक्ट. ठीक है. So those households that are no longer eligible, so people who stop demanding work for many years, ठीक है, उनकी जॉब्स मिल चुकी है. तो वहां पे हमारे होते हैं क्लीनअप्स, ठीक है. अब do you think it is like as precise as it's like said in these two pointers? Do you think so? कि इतनी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम हो रहा होगा? Do you think? Where are your notebooks? कौन लिखे? तो इन दो चीजों की वजह से, ठीक है, 27 lakhs का जो गैप है, जो डिलीशन है, वो इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है. So imagine that there is a person named Beena and she had a like job card in one village, but she has like moved permanently to another state and is working there continuously. And under such circumstances, her old registration might get cancelled or deleted, ठीक है, और a duplicate enrollment might get detached or removed, ठीक है. तो उस बेसिस पे उसका नंबर, उसका जॉब कार्ड डिलीट हो गया, ठीक है. अब प्रोसेस और क्राइटेरिया क्या है क्लीनअप का? What is the process? पहले तो registration. You said registration. Okay, good. First is registration. What else? So a household applies, get a job card, become eligible. पहले पे तो first step ये है कि तुम्हें मैग्रेमा में तब रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, तब तुम एलिजिबल बनोगे. सेकेंड इज डाटाबेस एंड आधार सीडिंग्स, ठीक है. व्हाट इज डाटाबेस? क्या होगा इसमें? एज आई सेड कि आधार कार्ड्स, ठीक है, और तुम्हारे बैंक अकाउंट्स, ऑल द डिटेल्स दैट आर कैप्चर्ड, राइट, दे शुड बी सबमिटेड सो दैट वेरिफिकेशन कैन बी डन, ठीक है. फिर उसके बाद eKYC, डीडुप्लीकेशन, कि तुम्हारा कोई और दूसरा कार्ड तो नहीं है. अगर है तो वन ऑफ देम विल बी डिलीटेड, ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग. देन अनदर वन इज रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग में क्या होगा? They know about someone. Okay, so monitoring means that authorities, they track down like how many deletions happens, how many additions happen, right? What were the reasons of these? ठीक है, जैसे कि अभी हुआ. So they'll keep an eye. Authorities will keep an eye on these acts. ठीक है. अब अगर इतना डिलीशन हुआ है, like 27 lakhs, it's a huge number. It's like पूरी एक सिटी को गायब कर दिया, ठीक है.
27 lakhs is a huge number, right? So is it like something to be concerned about? Is it? Are there like some loopholes in this? Do you think कि इतनी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चीज हुई होगी? कुछ तो दिमाग में होगा। 27 lakhs तुम्हें लगता है कि इतना कोई like authorities पूरा नजर रख रही होगी पूरे एक्ट पर? Okay, so there is a risk of exclusion. What is risk of exclusion? What is risk of exclusion? So when you try to clean our list, sometimes correct names also get deleted by mistakes. ठीक है, तो 27 लाख में से सारे नाम सही होंगे that we cannot guarantee, right? So this is the risk of exclusion. ठीक है, so example is like a worker's Aadhaar number fails to link not because they are fake but because या तो स्पेलिंग की जो स्पेलिंग नेम है वो डिफरेंट है, राइट? या फिर फिंगरप्रिंट मशीन उस टाइम पर काम नहीं कर रही थी, या फिर दे डोंट हैव अ फोन, या फिर दे डिडंट नो अबाउट द डेडलाइन. ठीक है, सो दीज कुड बी द रीजंस. ठीक है, तो दीज आर नॉट मैचिंग द कंडीशंस दैट वी टॉक्ड अबाउट कि इस बेसिस पे तुम्हारा डिलीशन होगा, राइट? मनरेगा में यू विल नॉट गेट दोज राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ केवाईसी या फिर इफ यू हैव लाइक डुप्लीकेट आइडेंटिटीज. ठीक है, बट दीज आर द फॉल्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सो देयर माइट बी सम केसेस जहां पे इन रीजंस की वजह से तुम्हारा डिलीशन हो सकता है. अग्री? तो सच पर्सन इज स्टिल पुअर और अभी भी उसे जरूरत है इस एक्ट की. ठीक है, बट दे गेट डिलीटेड अनइंटेंशनली बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम लैक करता है इस चीज में. सो दिस इज समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट एंड इट शुड बी चेक्ड एंड वेरीफाइड. ठीक है, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस चीज में इफ दैट पर्सन इज नॉट गेटिंग दोज थिंग्स? Social justice, okay, perfect. So pehla impact on livelihood. If someone's job card is deleted but they still need work under this act, their entitlement may be impacted. ठीक है, they will not get the jobs. जो उसका हक था, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने जिसके लिए स्कीम्स रखी थी, he is not getting that. ठीक है, then transparency or process. What this has to do anything with transparency? जब डिलीशन हुआ था, what they asked, what these people asked कि हाँ तुम्हारा basically ये कार्ड डिलीट हो रहा है. What they asked, no. So transparency is loosened here, right? So what they given time to update e-KYC. ये सारी ट्रांसपेरेंसी, these questions tells us, ठीक है, कि उन्हें टाइम दिया गया था और was that deadline like efficient कि तुम उस टाइम पर काम करा सकते हो, right? What the villagers leader trained about the process, e-KYC, electronic, not everyone is open to those digital things, right? Then is there a clear way for wrongly deleted workers to appeal? So ये सारे questions raise करता है. These things tells us कि transparency है system में, ये नहीं है, right? Okay. Now in many rural areas, people don't even know that their cards were deleted or they can appeal or not, if they can resubmit their documents or not. ये सारी चीजें हैं ही नहीं. And 27 lakhs is a big number, right? Anything else you want to talk about? Okay. So the question arises that are these criteria for deletion clearly communicated to the stakeholders? मतलब workers को पता चला था या नहीं पता चला था, right? And is there a grievance? तुम कहीं पर जाकर इस चीज के लिए कंप्लेन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? Is there a place where you can submit your resubmit your documents or not, right? So ये सारी चीजें we should verify and we should ask, right? And what is the net effect on employment under मनरेगा? So fewer workers means fewer person days of worker or better targeting of resources. So these are the questions that should be asked. ठीक है, okay. So there is a thinker, John Rawls, and what he says justice as fairness. Did you read him ever? What he says? Heard about What he said? it. Was kind of good. Okay, he was good. ठीक है. So he says that society must be fair to the most disadvantaged people. ठीक है, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, those poor people, like we should concentrate on that. We should work towards them. People, society, government should work towards them, right? And he talks about equal basic rights for all. ठीक है, हर किसी के लिए equality में rights होनी चाहिए, right? And he talks about veil of ignorance, very important, and you can use it in many papers.
Veil of ignorance. So this is a homework of yours, and online students can write in the comment section ki what it means. Okay, I'll explain it to you, but what exactly he was trying to say, that you have to write it down. And this is homework of yours. कि तुम इसको पढ़ कर आओगे, ठीक है, your own notes. So veil of ignorance means that cover yourself, ठीक है, and blindly, like without thinking that who will be benefited from this, right? And without thinking that if I'll be benefited from this or not, right? Then make the decision, then make these acts, ठीक है. जैसे मनरेगा बनाया गया था, तो इसका पर्सपेक्टिव ये था कि इससे फायदा होगा या नहीं, ये नहीं था कि रिच को और रिचर बनाया जाए, पुअर को थोड़ा और बेनिफिट मिले, उस कंडीशन के साथ ये एक्ट बनाया गया था, राइट? सो दिस इज वेल ऑफ इग्नोरेंस. डिसाइड्स रूल एज इफ यू डोंट नो वेदर यू विल बी रिच और पुअर. बस किसी सोसाइटी को, किसी कम्युनिटी को इस चीज से बेनिफिट मिलेगा, राइट? दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग दैट डिसीजन, राइट? सो दैट्स वेल ऑफ इग्नोरेंस. अंडरस्टूड? ओके. Next very important news. Where is that? Okay. So the news is too little, much later on the Digital Personal Data Protection Act 2025. ठीक है. तो क्या हुआ कि there was like this act DPDP, Digital Personal Protection Act. So it came in 2013, right? तो पहले 2013 वाला हमें ये बताता था like how, sorry, 2023. So this used to tell us that how things should be done. Right? अब 2025 DP tells us like what kinds of rules and regulations to be made. So basically this makes sure that your data, right, whatever data you are submitting to the apps, right, digitally तुम जितना data डाल रहे हो, वो basically कैसे use होना चाहिए, कितना use होना चाहिए, and who should use it, right? So these kinds of things are mentioned in it. So the difference is between how and what, right? So 2023 used to ask what kind of data should be submitted, right, and what these companies should do with this data, right? But 2025 DPDP says that how you should use this data. So it's more towards the privacy concerns. Okay. So let's imagine that you download an app, right? If you like, there are certain things that that app asks: your name, your email ID, your phone number, right? And you shop online, and same things are asked. You sign for the website, same things are asked. You use social media, right? And your photos, contact, activities, so everything is like stored online. Okay. और आज के टाइम पे we are so much dependent on these things that we cannot even think कि हमारी क्या क्या चीजें वहां पे stored है, right? And this is something to be concerned about क्योंकि it's like invading privacy, right? So each and every information is your personal data, right? But earlier in India there was no strong law to control how companies use this data. पहले कुछ नहीं पता था. पहले used to submit your email ID, your phone numbers, right, everything, and you didn't like care about it, ठीक है? But now there were certain issues, certain cases that came up, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारी basically इनको मिस यूज किया जा रहा था, right? And then these strong laws came up. So that was a problem because companies collected too much data. They shared it without telling people, ठीक है? Or they kept it forever. People didn't know how to delete their data, ठीक है? ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो रहा था, कंपनीज वर यूजिंग दीज डेटा एज पर देयर रिक्वायरमेंट, किसी को भी भेज रही थी, ठीक है? नाउ दिस डेटा ब्रीचेस लीक हैपेंस ऑफन, बहुत देखने को मिल रही थी. सो इन 2023 इंडिया पास द डीपीडीपी एक्ट, ठीक है? सो थिंक ऑफ दिस लाइक अ बिग रूल बुक, ठीक है, व्हिच इज टेलिंग यू दैट व्हाट यू शुड डू, ठीक है? देन केम डीपीडीपी रूल्स 2025. व्हाट इट टेल्स? So this is like a big instruction manual, ठीक है? ये बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे करना चाहिए. अब हमें ये बताओ रूल्स की जरूरत क्या है? We humans are like running towards, freedom. As one thinker says that humans are condemned to be free, and this condemned is a very harsh word, but this is the reality, right? Once we are born, we are never free.
We are like running each and every day, we are running towards the freedom, but we are never free. So why do we need rules? क्यों चाहिए तुम्हें rules? Rules तो are like बंदिश होती हैं. So why do we need it? Guidelines also. Okay. So we need these rules because the government wants to give citizens more control over their data. ठीक है? So why? So basically, you will get to know that why this data is collected, right? How it is used, who it is shared with, and make companies ask clearly before collecting this data. ठीक है? So it's like that you have the consent, right? Before that data is shared, you have the consent, right? So companies must ask in simple language that if we can have access to this data or not. So this is what 2025 DPDP is, right? This is like more liability towards the customers, right? So if you no longer want an app or WhatsApp to have websites to store your data, right? So you have full consent, you have like full right to delete your data, to tell that website, to tell that app that yes, you can delete my data, right? So this hold a companies accountable, right? It informs the government, it informs the users, and it fixes the issues and face penalties if they are misused. अगर तुम्हारा data breach होता है, then they have to like submit the fine and they can be like jailed also. ठीक है? तो ये सारी penalties mentioned है इस 2025 के DPDP में. ठीक है? So what it helps us in its misuse of personal information. ठीक है? Selling your users data and profiling people with consent and keeping data forever. तुमने देखा होगा कि पहले जो भी तुम डेटा डालते थे, ठीक है, that used to like they used to store that data for many years, like forever, and they used to give their data whoever they wanted to. But अभी ऐसा नहीं होगा. अगर तुम comfortable नहीं हो, then you can tell the website कि मेरा data delete कर दो, ठीक है? So imagine the internet is like huge apartment building of apps, ठीक है? And each app has a room where your personal belongings data are stored, ठीक है? So earlier these rooms were unlocked, ठीक है? Owners didn't tell you that what they are storing. उस कमरे के अंदर क्या है तुम्हें नहीं बताया जा रहा है, ठीक है? So कुछ बहुत unnecessary stuff भी था और कुछ ऐसी भी चीजें थी जो basically खोल दी जाती थी and they used to like store that stuff of yours. तुम्हारा सामान है, ठीक है? दरवाजा खोल दिया गया है and they used to steal that stuff. ठीक है? तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एक प्रॉपर सिक्योरिटी रखते हैं फॉर दिस बिल्डिंग, ठीक है? एंड दिस डीपीडीपी एक्ट 2023 इज द मेन सिक्योरिटी प्लान एंड डीपीडीपी रूल 2025 आर लाइक द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कि कैसे करना है, ठीक है? जैसे कि हाउ टू लॉक द डोर एंड उसके बाद हाउ लॉन्ग यू कैन कीप थिंग्स, उस कमरे के अंदर तुम कितने देर तक सामान को रख सकते हो, ठीक है? एंड व्हाट टू डू इफ समथिंग इज स्टोलन, अगर तुम्हारा डेटा चुरा लिया जाता है, ठीक है? तो कंपनी हैव टू टेल यू कि तुम्हारा डेटा ये चुरा लिया गया है, राइट? एंड दीज आर द मेजर्स दैट दिस कंपनी इज टेकिंग एंड दीज आर द मेजर्स दैट यू कैन टेक, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन दिस डीपीडीपी 2025. अंडरस्टूड टिल हियर? ओके. सो अब ये रूल्स ऑपरेट कैसे करेंगे? ओके, नाउ ये रूल्स ऑपरेट कैसे करेंगे? पहला है कंसेंट एंड नोटिस. सो व्हेनेवर अ कंपनी, राइट, they wants to collect your data, they need to clearly tell you कि ये डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, राइट, एंड व्हाई दे आर कलेक्टिंग इट एंड हाउ दे विल यूज इट, ठीक है? तो ये सारी चीजें वो बताएंगे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ऑल दीज क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, ठीक है? फिर उसके बाद दे नीड टू आस्क फॉर योर कंसेंट कि क्या हम ये चीज कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन टेल देम कि नहीं, और अगर हाँ तो तुम इस पीरियड तक मेरा डेटा कलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद लाइक यू हैव टू डिलीट इट, ठीक है? So security safeguard. The companies have to protect the data they collect with reasonable safeguards. ठीक है? Encryption should be there. Firewall should be there. Right? They should make sure कि तुम्हारा data, चुराया ना जाए. Right? So if there is a data breach, like someone hacks the company, right? And the company has to inform you clearly and quickly, message के through या फिर कैसे भी, कि what happened और तुम्हारा कौन सा डेटा एक्सपोज हुआ है, right? And how bad it is, कितना ज्यादा मेजर्स उसके लिए लिए जा रहे हैं, एंड व्हाट यू कैन टेक, व्हाट मेजर्स यू कैन टेक, ठीक है? तो ये सारी चीजें उस कंपनी को तुम्हें बतानी पड़ेंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डाटा रिटेंशन. Then we have data retention. Data retention, company shouldn't keep personal data for longer than needed, right? So according to the rules, they cannot just store old data forever. हमेशा के लिए वो नहीं रख सकते, ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो डेटा रखेंगे एंड दे हैव टू टेल यू कि हम इतने टाइम के लिए आपका डेटा रख रहे हैं, ठीक है?
Then consent manager. So the rules mention something called a consent manager. क्या होगा consent manager? What do you think? Words itself is telling you the story. You are the consent manager, right? So this would like record and track that what you have given like permission for. ठीक है? So now next is children data. क्या है children data? बताओ. हाँ तो what it has to do anything with this? Okay, if someone is under 18, तो company needs to verify कि parental consent होना चाहिए कि आपके बच्चे का हम ये data रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ठीक है? तो that's children consent, वो भी 2025 DBTP में mention हुआ है, ठीक है? Then there is data protection board. So it's a body that will enforce these rules. जो भी 2025 के DBTP में mention है, तो this board will ensure कि वो सारे manuals में जो rules लिखे गए हैं that are implemented or not, ठीक है? So this board will act digitally. So it's like it's born to be digital, right? And it will make sure that complaints and appeals can be handled online. ठीक है? जितनी भी सारी problems होंगी वो सारी online handle होंगी, and it will make sure that whatever the rules and regulations are like implemented are given in the manual, they are used efficiently. Understood? Okay. Next about penalties. अच्छा अगर तुम्हारा data breach हो जाए, तो what like penalties you want? क्या चाहिए? अच्छा what's the like private data of yours that you don't want to reveal online? Ashutosh is asking that what is encrypted regarding WhatsApp. So Ashutosh, it's like that it locks your all the messages, right, with a special secret code, right? So only the receiver's phone has the like key to open that, lock. So it's like that. So only you and the person you are chatting with can read those messages. Yes. अच्छा, क्या पेनल्टीज चाहिए तुम्हें उसके लिए? पैसा. तुम्हें चाहिए पैसा? ठीक है. सो देयर आर सर्टेन फाइन्स, ठीक है, पेनल्टीज है. तो दीज बिग फाइन्स डिपेंडिंग ऑन हाउ सीरियस द ब्रीच इज. अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने भेज दिया या फिर वो चोरी हो गई है, तो उसके बेसिस पे यू गेट द पेनल्टीज. ठीक है. चल, अब तुम किस तरीके की चैट करते हो वो पता नहीं. ठीक है. अब देयर इज गवर्नमेंट exemptions. Now this raises the concern. गवर्नमेंट exemptions क्या होगा ये? Exactly. So they government have like a special access. So in certain cases, state agencies can demand these like data, right? And without following the usual steps that are given for us. ठीक है? वो सारी exemptions government के लिए है. So if the government takes someone's data, the company does not have to inform the person. तुम्हें नहीं बताया जाएगा. अगर government ने data लिया है, तो वो लिया है उनकी मर्जी. So what do you think about it? Is there something to be like? Is it good? नहीं? क्यों? Can be used by government also. So the reason should be national security concerns. Suppose national security concerns say they asked to have this data. Now it's good. But what if the reasons are political? Then that's why it's not good, right? So these are the reasons. अब ये why ये too little much later का क्या concept है? So what are the later like criticism that we can have on this? First one is delay.
So delay is that people said that we waited too long for this, right? The Supreme Court in 2017, ठीक है, उन्होंने recognize किया था ये privacy हमारे fundamental right में आता है ये, but still it took so long to implement it. So now in 2025 people like government is coming with this manual. So इतने time के बाद, right, इससे पहले हमारा जो privacy थी वो breach हो रही थी, so it took so much of time, तो delay हुआ इस चीज में. Then उसके बाद RTI का काम होता है right to information, what it does. Ask any question regarding the national wealth used or any scheme directly. Yes. So basically, this is one RTI helps citizens ask the government questions like how many money was spent, how officials behaved, right, and why a decision was taken, right, and these asset details, public servant scheme, right, and investigation reports. ये सारी चीजें. So earlier even personal data could be disclosed under RTI if there was like a public interest, है ना? But अब DPDP Act के साथ में they are like expanded this personal data broadly, properly बताया कि तुम्हारे ये personal data और ये नहीं है, ठीक है? So this some way like ensures our safety also, है ना? The government departments can refuse RTI request by saying, अब ये चीज यहाँ पर आती है another factor कि अगर हमें कोई information चाहिए, ठीक है, from the government, now even government departments can refuse this RTI, ठीक है, क्योंकि DPTP क्या provide करा रहा है तुम्हें? Privacy provide करा रहा है. Even government can say this कि हमारी भी तो privacy है, right? So these things, information that we wanted, this transparency that we wanted, right? This will not be given to us, right? So less transparency means more secrecy. और अगर government में secrecy है, so what it means? There is something fishy, right? So suppose a citizen files an RTI, ठीक है, and it says that what are the assets details of government officials facing corruption charges. उसने ये पूछा, RTI फाइल कर दी उसने इस चीज के लिए. तो पहले क्या होता था कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंडर उसे वो सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी, राइट, बट नाउ गवर्नमेंट कैन रिजेक्ट इट बाय सेइंग इट कि ये तो मेरा पर्सनल डाटा है, मैं नहीं दूंगा, राइट. सो दिस इज समथिंग रॉन्ग, राइट. तो ये वाली प्रॉब्लम, दिस वीकन्स द आरटीआई एंड जर्नलिस्ट आल्सो, ठीक है. तो हमारा जो पावरफुल टूल है आरटीआई, ठीक है, कहीं ना कहीं वो वीक हो रहा है एंड इट इज अ लाइक कंसर्निंग टू अस, ठीक है. ओके, नेक्स्ट वी हैव अनचेक्ड गवर्नमेंट पावर. क्या है अनचेक्ड गवर्नमेंट पावर? So it says that government has too much power under these rules. एक बात मैंने बताया तुम्हें, ठीक है, कि they can even have like access to our data without asking anything. कि national security concern है and we want their data और उससे कोई question भी नहीं किया जाएगा, right? So the state can demand data without enough checks and balances, ठीक है. So this is something concerning to us. So there is no clear requirement in the rules that the government must tell you when it demands your data. तुम्हें बताया भी नहीं जाएगा, ठीक है, और वो डेटा तुम्हारा ले लेंगे. So that's a big problem because it means potential for misuse with very little transparency, right? And then weak oversight. How weak oversight? वीक ओवरसाइट इसलिए क्योंकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, राइट, सो दिस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, जो इम्प्लीमेंट करेगी ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, is this strong enough to implement these rules and regulations? Is it strong enough to have our online complaints that it was claiming, right? So these are the questions that are raised कि अगर ये weak हुई then what, right? You want to say something? Okay. So if you complain to this board, right, will it really act strongly or will this bureaucratic inertia win, right? So this is the question that is like asked. Then vague terms. So certain key terms in the rules are very vague. For example, what exactly necessary purpose means for government data, right? कि necessary purpose के लिए तुम्हारा data ले लिया जाएगा. So there are certain terms जो बहुत vague हैं, which are not also cleared, ठीक है? Because of this vagueness, the government might interrupt the national security, है ना, or public interest in a very broad way. Because so these are the concerns that were arising in that. Okay. So from this we understood कि RTI weak कर रहा है ये, right?
Now, weak oversight, data protection board may not be fully independent, and effectiveness of users complaints uncertain. Then government overreach and surveillance risks, no obligations to inform citizens when state access data. Then national security और public interest clearly defined नहीं है, ठीक है? इस manual में these two terms are not clearly defined. मतलब government can come anytime, right? And the basis of this they can ask for the data. Then delayed protections. This board which is claiming that will have the like all the complaints, ठीक है, वो कितना ज्यादा safeguardly हमें protect करती है, that's not clearly mentioned, right? Then some safeguard will take 12 to 18 months to fully apply. अब ये बात तो हो गई है, मैनुअल तो तुमने डाल दिया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, राइट? बट अगर उस चीज को इंप्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट्स द अनदर क्वेश्चन, राइट? 12 से 18 महीने तो लग जाएंगे इसे अप्लाई करने में, राइट? बट तब तक क्या, what about the data till then users remain vulnerable during this transitions. Okay. Now, these are the penalties. Penalties for companies, heavy fines for data breaches or misuse, and depends on severity and negligence. Then government exemptions, कि government कभी भी आके तुम्हारा data ले सकती है, right? And why critics call it too little, much later? Because privacy declared fundamental right in 2017. पहले 2017 में आ चुकी है जब ये, तो फिर 2025 में implement क्यों हो रहा है? इतना time कहाँ? तो इसके बीच के गैप का जो हमारा डेटा ब्रीच हुआ है, व्हाट अबाउट दैट? सो दीज आर द क्वेश्चंस, दीज आर द कंसर्न दैट दिस रेजेस, राइट? देन लॉन्ग डिले मींस रश्ड इंप्लीमेंटेशन, ठीक है? अब अगर इतना डिले हो चुका है ऑलरेडी 2017 से 2025, राइट? तो इसका मतलब हमें इंप्लीमेंट जल्दी करना होगा, और अगर तुम जल्दी कर रहे हो, इफ यू आर लाइक डूइंग समथिंग इन हेस्ट, तो इट मींस कुछ ना कुछ चीजें खराब होंगी, ठीक है? Okay, so the big picture is that rules improve corporate accountability but may reduce government transparency and citizens' right. Right, your data becomes safer from companies but not necessarily from the government. Understood? Chalo. So there are lots and lots of questions which are asked. Prelims में तो बहुत सारे questions and same goes with mains जो data privacy से आते ही आते हैं हर बार, ठीक है? So there are few questions. Please read them and answer it properly. पढ़ा? What is the correct answer? Right to privacy, consider the following statement. Right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to. Yes. Online students. Okay. Next. बताओ. Other can be used to Perfect. Like which one? B. Two only, right? Okay. Next. Okay, this one is your homework. Which one? Okay. Chalo, next. Jaldi. Okay, homework. And online students can write in the comment section. Next. Fast. दिख रहा है? Is it visible? Good. Chalo. Okay. Now moving to the next news.
Okay. So, what is POCSO Act? Protection of children from sexual offences. ठीक है. So this law was made in 2012. ठीक है. Why it was made? क्या जरूरत पड़ी इसकी? अंकिता. Okay. So before this, like for many years, children's sexual abuse was not even recognized properly in law. ठीक है. तो under IPC, India Penal Code के अंदर ही उस चीज को रजिस्टर किया जाता था, right? So which was written in 1860. ठीक है. 1860 में कभी लिखा गया था और वहां पे प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया था कि लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी मेंशन नहीं की गई थी, राइट? ना ही चाइल्ड प्रोटेक्शन मेंशन किया गया था. सो इट वाज वेरी कंसर्निंग. ठीक है. सो this was like a triggering. ठीक है. And finally this silence was broken in 2007. ठीक है. तो क्या हुआ 2007 में? दैट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उन्होंने बहुत एक शॉकिंग एक स्टडी रिलीज करी, नेशनल स्टडी रिलीज करी कि 53% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन दे रिपोर्टेड फेसिंग फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज. ठीक है. 53%. ठीक है. इट्स अ ह्यूज नंबर. सो मोस्ट ऑफ द अब्यूजर्स वर पीपल ऑफ लाइक चाइल्ड दे न्यू. जो बच्चे उन लोगों को जानते थे, जो उनके करीबी थे, राइट? दोज वर द पीपल. ठीक है. सो व्हेन दिस रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड, राइट, इन पार्लियामेंट, सो मेनी एमपीज वर आल्सो शेकन from this data. So media picked it up, and this civil society group, they also like finally raised their voice against this, and they finally realized कि हाँ एक अलग से पैनल इनके लिए होना चाहिए, राइट? फिर उसके बाद इसके साथ साथ एक पुश और आया था. तो कोर्ट ऑल्सो स्टार्टेड पुशिंग दीज क्वेश्चंस, रेजिंग दीज क्वेश्चंस, है ना? एंड रेजिंग दीज क्वेश्चंस बिटवीन दिस गैप कि ये गैप आ क्यों रहा है, राइट? So judges often complained that IPC did not define this penetrative assault, harassment और यूज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पोर्नोग्राफी. ठीक है. तो ये सारी चीजें मेंशन नहीं थी आईपीसी में, राइट? सो क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी कहीं ना कहीं वो सवाल आ रहे थे. तो फिर उसके बाद चिल्ड्रन हैड टू फेस लाइक होस्टाइल पुलिस स्टेशंस. जब उनके साथ वो असोल्ट होता है, उसके बाद दे वर लाइक टेकन टू पुलिस स्टेशंस एंड दे वर लाइक बेसिकली क्वेश्चन, राइट? तो वो प्रोसेस भी बहुत ज्यादा गलत था, राइट? सो दे वर लाइक टेकन टू अडल्ट कोर्ट्स. उनके लिए कोई अलग से कोर्ट नहीं बनाए गए थे, एंड वेरी हार्श क्रॉस एग्जामिनेशन वाज सीन. ठीक है. तो इन सारी चीजों को कंसर्न करते हुए वी केम इन 2009 एंड 2012. देख रहे हो कितना ट्रेवल करना पड़ा है. ठीक है. 2009 से 2011 के बाद में एनजीओज लाइक हक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड लाइन इंडिया, दे फाइनली स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइसेस. ठीक है. दे टुक इट इन देयर कंसर्न, और फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज पे आवाज उठानी पड़ी. और उसके साथ में एक और चीज हुई कि हाई प्रोफाइल केसेस जो हुए थे वो काफी देखने को मिले थे. अगर हाई प्रोफाइल केसेस नहीं होते, एनजीओज नहीं होते, कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो ये एक्ट हमारे पास नहीं होता. ठीक है. फिर उसके बाद फाइनली 2012 में दिस पॉक्सो एक्ट केम अप विद क्लियर डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस कि ऑफेंस कैसा था, किस जेंडर का है, राइट? एंड दिस फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स, राइट, कि किस किस बेसिस पे क्या क्या प्रोसीजर्स लेने हैं, दोज वर आल्सो मेंशन्ड. एंड दिस चाइल्ड फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा हार्श होती थी, इट बिकेम वेरी चाइल्ड फ्रेंडली, राइट? एंड प्रोटेक्शन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ वर रिटन. ठीक है. कोई बायसनेस नहीं दिखाई गई थी उसपे, राइट? एंड दिस मैंडेटरी रिपोर्टिंग वाज आल्सो मेंशन्ड. सो ये सारी चीजें मेंशन की गई. ठीक है. अंडरस्टूड. तो 2019 दिस पोक्सो वाज अमेंडेड टू मेक पनिशमेंट स्ट्रिक्टर. ठीक है. तो 2019 में जो लॉज थे उन्हें और थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया गया, और डेथ पेनल्टीज भी इंट्रोड्यूस की गई. ठीक है. कुछ कुछ केसेस में, एंड पनिशमेंट इंक्रीज फॉर ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग पोर्नोग्राफी. पोर्नोग्राफी का भी मेंशन किया गया इस 2019 वाले पोक्सो एक्ट में. देन लॉज वर अपडेटेड टू इंक्लूड न्यू रिफॉर्म्स ऑफ डिजिटल क्राइम्स. ठीक है. तो पोर्नोग्राफी भी और उसके बाद डेथ पेनल्टीज भी, सारे मेजर्स को कंसर्न किया गया. ठीक है. देन ये क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन दे वर लाइक इंक्रीजिंग अ लॉट, और फिर उसके बाद सोसाइटी डिमांडेड स्ट्रॉन्गर डिटरेंस फॉर दीज क्रिमिनल्स. तो 2012 से पहले इंडियन डिडंट हैव लाइक स्पेसिफिक क्लियर और चाइल्डहुड फोकस्ड लॉज सेक्सुअल क्राइम के अगेंस्ट. ठीक है. तो एग्जिस्टिंग लॉज वर जनरल और ज्यादा मॉडर्न क्राइम्स कवर नहीं किए गए थे. बट वो उसके बाद जब एनजीओज ने अपना बेसिकली क्वेश्चन रेज करने शुरू करे, कोर्ट्स ने भी क्वेश्चन रेज करने शुरू करे, एंड फाइनली देयर वर केसेस, ठीक है, which were very high profile, which basically managed to get the attention of people also. तो तब जाके हमारे पास ये एक्ट आया. अंडरस्टूड. तो what it mandates that child should be spoken
that child should be spoken to in a friendly way, right? Police should wear plain clothes, not uniforms, right? To make those people, those children comfortable, right? And children's statements must be recorded as a place where the child feels comfortable. अगर घर पे comfortable है तो वहां पे ही उसकी statement ली जाएगी. Understood? Then child should not be repeatedly called to the police station. जैसे पहले क्या था कि कहीं पर भी बुला लिया जाता था, right? वो change किया गया. Then in identity of the child must never be revealed, right? And special courts called Foxo courts must finish cases quickly. पहले adult courts में बुलाया जाता था बच्चों को, but now there were certain courts that were made for children. ठीक है, तो ये सारे changes आए, समझ में आया? अब न्यूज में ये सी है because there is a mention of general neutral. ठीक है, तो general neutral का मतलब क्या है यहाँ पे? पूरी कहानी बताओ तुम मुझे. मैं कितनी बार बोला कीवर्ड्स चाहिए, बट इट डजंट मीन कि तुम मुझे ही बता रहे हो. What it might be saying. Tell me the history, tell me the story. Ankita. What could be the concern? And now we are coming up with this solution, gender neutral. This is what I'm asking. जेंडर न्यूट्रल की बात उठी ही क्यों? ऐसा क्या हुआ होगा कि जेंडर न्यूट्रल के बारे में हम लोग बात करने लग गए? जेंडर न्यूट्रल तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि दोनों को बराबर लेकर चलेंगे, ही एंड शी बोथ, मेल एंड फीमेल बोथ, इतना मुझे भी पता है, पर ये बात उठी क्यों? या फिर ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज किसी एक जेंडर पे ही होगा. ठीक है, so the victim, right, the child can be any gender, right? So boys, girls or children of their other genders are all covered. ठीक है, पहली चीज ये. And the offender, right, the person who committed the crime can also be any gender. ठीक है, तो ये gender neutral है. So the law doesn't only see men as possible abusers. Women are also there who are held accountable, right, who did these crimes. तो जेंडर न्यूट्रल है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो विक्टिम्स पर और ना ही क्रिमिनल्स पर, right? Then courts have explicitly upheld that, for example, Karnataka High Court said कि gender of the person doing the abuse is immaterial, right? What matter is the act and that there was a child. सिर्फ ये मैटर करता है कि वहां पे एक चाइल्ड था and there is a abuser, right? अब उस चाइल्ड का क्या जेंडर है और उस अब्यूजर का जेंडर क्या है, that doesn't matter. दोनों को सेम ही सजा मिलेगी, right? This is what it says. Now why this was designed? तो basically it is what says about protection for all children. ठीक है, तो बायस नहीं होगा. अब्यूज isn't just a girl problem. ऐसा बोला जाता है ना कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही ऐसा होगा, but there are cases where it is seen कि लड़कों के साथ भी ऐसा हो रहा है, right? So next is offenders can be any gender. ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि लड़के ही ऐसा ऑफेंस करते हैं, लिमिटेड टू मेन, दीज क्राइम्स आर लाइक लिमिटेड टू मेन, बट ऐसा नहीं है. सो लॉज लाइक दे शुड पनिश to for any person, right? So regardless of their gender, for such crimes they should be punished, right? Then modern and progressive, having a law that does not rely on outdated genders. जैसे पहला माना जाता था कि ये तो लड़का है, ये तो कर ही नहीं सकते ये सारी चीजें, ठीक है, या इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता. अब वो सारी चीजें नहीं है. विद द मॉडर्न वर्ल्ड वी आर लाइक मूविंग टुवर्ड्स इट. कितनी गलत बात है ना कि मतलब गलत दिशा में जाए. मॉडर्न में भी हम किस वर्ड में मॉडर्न यूज कर रहे हैं? ओके, नाउ इट्स टॉक्स अबाउट क्लैरिटी एंड फेयरनेस आल्सो in court. ठीक है, because the law explicitly tells कि हर person, any person is mentioned, right? So any person means despite of their like gender, right? We have to give punishment और फिर उसके बाद justice also. Understood is here? Okay. So suppose a 14-year-old boy is sexually assaulted. ठीक है, तो under this POCSO Act, so he is just must as like a child who had like this sexual, you know, offense. तो उसको सिर्फ वैसे ही कंसीडर किया जाएगा इस एक्ट के अंदर. ठीक है, देन देयर इज अ वुमन हु इज अ ऑफेंडर. ठीक है, तो सेम गोज विद हर. तो देयर इज अ फीमेल टीचर हु इज लाइक सेक्सुअली अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल असोल्ट ऑफ अ चाइल्ड. ठीक है, तो सेम उसको भी एज अ क्रिमिनल ही देखा जाएगा, नथिंग अपार्ट फ्रॉम, ना टीचर और ना ही उसका जेंडर कि वो फीमेल है, राइट? ओके, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जैसे कि अभी मैंने बताया कि जेंडर ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट मैटर, उन्होंने ये चीज बोली है. ठीक है, then this gender neutral language, even though some sections in the law many use this gendered pronouns, so but here in this case we are not talking about that. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया. अब कुछ लोग इस चीज को मिसअंडरस्टूड और डिसएग्री करेंगे. व्हाई?
Do you think there are people in the society who will like raise concern or their questions against this? तो पहले दिस पोक्सो एक्ट बेसिकली वी यूज्ड टू थिंक कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए बना है एंड स्टिल पीपल थिंक दिस, ठीक है? तो कहीं न कहीं दिस दे लाइक थिंक दैट दिस इन्वॉल्व्स ओनली मेल ऑफेंडर्स. सो दे फील लाइक दिस इज स्टिल फॉर गर्ल्स एंड लीगली अकॉर्डिंग टू पोक्सो दैट्स नॉट करेक्ट, राइट? और यही चीज़ बताने के लिए सारी चीज़ें हमें मेंशन की गई हैं. ओके. अब ये बोला जाता है कि व्हेनेवर दिस लॉ इज लाइक जेंडर न्यूट्रल, तो कुछ लोगों का ये कंसर्न है कि व्हाट इफ समवन यूजेस इट रॉन्गली, व्हाट इफ फॉल्स केसेस इंक्रीजेस, ठीक है? व्हाट इफ द लॉ इज यूजेस अगेंस्ट वुमेन टू, ठीक है? इन सोशल डिबेट्स एंड इवन सम कोर्ट डिस्कशंस पीपल हैव सेड लाइक वुमेन जनरली ऐसे क्राइम्स करती नहीं है, ठीक है? बहुत बार ऐसे इश्यूज कंसर्न आते हैं, राइट? एंड देयर आर लाइक स्टेटमेंट्स ऑफ जजेस टू, जो बहुत सारे जजेस ने अभी रिसेंटली भी दिया हाई कोर्ट से. तो मेकिंग इट जेंडर न्यूट्रल माइट अलाउ मिसयूज, ठीक है? तो ये सारे कंसर्न ये कहीं ना कहीं जेंडर न्यूट्रलिटी रेज करती है. अंडरस्टूड है? ओके. एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? So now this tells us that protection doesn't depend on whether the child is boy or girl. ठीक है? This makes POCSO very powerful and fair for all of us. ठीक है? Then accountability doesn't depend on offender's gender. ये सारी चीजें हमें बताती है. So there is a thinker named John Locke. He says that children have natural rights, right? So Locke talked about natural rights, life, liberty, right, security, and children, right? So because there are more vulnerable, need even stronger protection. So this is why they need more and more protection. So this is what Locke says. Okay. Anything else? Chalo. So with this we'll end it, and I'll see you tomorrow.